तो गाइस, क्या आपके डेली लाइफ को एक होम थिएटर चाहिए या फिर आपका फ्यूचर प्लान है एक होम थिएटर बाय करने का, लेकिन आप जो है मेरे टाइप के हैं, मतलब DIY टाइप के हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई होम थिएटर खरीदने से अच्छा है हम सारे पार्ट्स को लेकर इसको घर पर ही असेंबल करें, घर पर ही इसे बनाए तो कितना मजा आएगा और ये कितना इंटरेस्टिंग भी बनेगा। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं मिल रहा है कि भाई सर्किट बोर्ड कौन सा यूज करें और कंपोनेंट्स क्या क्या यूज करें जैसे कि ये बिल्कुल होम थिएटर जैसा ही बने लेकिन हमारे हाथों से बने। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाने सिखाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से होम थिएटर, जिस पर गाइस एम्पलीफायर सर्किट हमने TDA 2030 जो कि बहुत सारे होम थिएटर्स पर आजकल आने लगे, मतलब ये कॉमन हो चुका है। तो इस वीडियो में आप इसका वायरिंग जो है वो अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो अगर आपको इसका स्पेशल वायरिंग देखना है तो सीधा सीधा आप क्लिक कीजिए आई बटन पर, वहां पर वीडियो आ रहा होगा, आप जाकर उसका वायरिंग का वीडियो बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जो थंबनेल पर आपने जिस तरह का होम थिएटर देखा उसी तरह के होम थिएटर बनाने वाले हैं, बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ लगाकर। इसकी गाइस अगर बेस क्लैरिटेशन, साउंड क्लैरिटेशन, छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी साउंड्स को भी ये बहुत अच्छे से निकालता है, क्योंकि इस पर हमने 2 ट्विटर्स लगाए हैं, 2 10 वाट के स्पीकर्स लगाए हैं, एक सबवूफर हमने लगाया है बेस के लिए। इस तरह से हमने कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके इसका कनेक्शन जो है बहुत अच्छे से किया है। लेकिन अगर आप इसका स्पेशल वायरिंग, स्पेशल कनेक्शन का वीडियो सीखना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं और परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपको पूछना है, आपके मन में डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन के ऊपर भी जरूर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में कुछ पर्सनल डाउट्स है या फिर आप मुझे कुछ पर्सनल बातें करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप DMs भी कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एक बार तो जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि हम वहां पर बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत भी एक्स्ट्रा कंटेंट वहां पर पोस्ट करते हैं। और गाइस, ये जो वीडियो है इस वीडियो का आइडिया मुझे इस वाले कमेंट से आया, जो कि हमारे किसी भाई ने ये कमेंट हमें किया था कि भाई जरा होम थिएटर को वायरिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। लेकिन गाइस, इस वीडियो पर मैंने पूरा जो होम थिएटर डिट्टो है उसको तो कॉपी करके मैंने नहीं बनाया है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको जो होम थिएटर का कनेक्शन है, उसका वायरिंग है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
Where are you now? Another dream. How much is left outside me? I'm fading.
गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको स्पीकर होम थिएटर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर हमारा होम थिएटर अच्छा लगता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। परिवार पर नए हैं और परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप हमें नीचे कमेंट पर बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन के ऊपर भी जरूर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपके मन में कुछ पर्सनल डाउट है या फिर आप हमें कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें डीएम्स भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।